students, welcome to Graduate Guru, the new session. We are doing business economics. In the last session, if you all remember, we did the banking industry in India. We studied the types of banking, commercial banking, cooperative banking and all those stuff. Then we also did the issues and the challenges that are faced by banking sector in India. In this session, we're going to start with a new topic, that is insurance industry in India. Okay? So, before starting the industry, before seeing the trends of insurance industry in India, we're going to see what do you mean by insurance. Okay? Insurance matlab kya? So, insurance is nothing but a protection against any risk of loss of life or property, any assets. ठीक है? So it is a protection against any risk, any जो भी risk होता है, risk किसको होता है? Loss of life या तो property. तो जो भी आपके लाइफ में रिस्क है, आपके लाइफ को रिस्क है, आपके प्रॉपर्टी को रिस्क है, उसके अगेंस्ट आप उसको प्रोटेक्ट करते हो, आप अपने जो वो रिस्क से लॉस अराइज होगा. नाउ इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ माय लाइफ, ठीक है, सो सपोज से आई टेल यू माय नेम इज विकास, ठीक है, मेरा लाइफ का कुछ वैल्यू है. नाउ कैसे वैल्यू है? बिकॉज आई एम अर्निंग, ठीक है, एंड आई एम अर्निंग एंड आई हैव डिपेंडेंस. डिपेंडेंट कौन कौन है? तो सपोज से आई टेल यू, मेरे पेरेंट्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन मी. माई फादर इज रिटायर्ड, माई मॉम इज अ हाउस मेकर, सो दे आर नाउ डिपेंडेंट ऑन मी, माई अर्निंग्स, राइट. तो अगर कल उठ के मुझे कुछ हो गया, तो मेरे पेरेंट्स का ध्यान कौन रखेगा? सो दे विल हैव नो इनकम. सो टू प्रोटेक्ट, सो दिस इज अ रिस्क. माई लाइफ, मेरे लाइफ को रिस्क है, सो वो रिस्क की वजह से कुछ लॉस होगा. अगर इफ आई डाई, देयर इज अ लॉस to my parents of income, right, of certain income, right, that income can be XYZ. So वो loss को बचाने के लिए मैं क्या करता हूं? मैं इंश्योरेंस लेता हूं. This is called as life insurance. So there are two types of insurance. There is life insurance and there is general insurance. This is life insurance. When I take insurance on my life, on the protection of my life, that is called as life insurance. और अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को इंश्योर करता हूं, जैसे सपोज से मेरा बिजनेस है, ठीक है, एंड आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स. सपोज से मैं ये मार्कर मैन्युफैक्चर करता हूं और डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता हूं. नाउ देयर आर टू रिस्क. फर्स्ट, मैं जब ये मार्कर बनाता हूं, गोडाउन में स्टोर करता हूं, ऐसा हो सकता है कि गोडाउन से चोरी हो जाए, या फिर गोडाउन में आग लग जाए, हो सकता है, या फिर कुछ नेचुरल कैलामिटी जैसे फ्लड आ गया तो पूरा गुड्स खराब हो जाएगा, या फिर जब मैं ये गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए, या फिर अगर मैं बाय सी भेज रहा हूं तो डूब जाए, ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ रिस्क होता है. सो मैं अपने गुड्स को इंश्योर कर रहा हूं, प्रोटेक्ट कर रहा हूं. मेरा रिस्क है, मैं जब गुड्स ट्रांसपोर्ट करूंगा, अगर ये गुड्स को कुछ हो गया तो देयर इज अ रिस्क, लॉस होगा मेरे को. वो लॉस को मैं क्या करूंगा? प्रोटेक्ट करूंगा. प्रोटेक्ट किससे करूंगा? इंश्योरेंस, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज जनरल इंश्योरेंस. आप गाड़ी चलाते हो, आप बाइक चलाते हो, बाइक का भी इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का भी इंश्योरेंस रहता है. तो कल उठ के अगर आपकी गाड़ी को कुछ एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, सो जो भी लॉस अराइज होगा, तो गाड़ी टूट गया, गाड़ी को स्क्रैच आ गया, गाड़ी का हेडलाइट टूट गया, सो जो लॉस होगा उसके लिए मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं इंश्योरेंस लेके. तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा? मुझे पैसे देगा, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी रिस्क ऑफ लॉस ऑफ लाइफ ऑफ और प्रॉपर्टी. आर वी क्लियर? नाउ insurance industry in India till the late 1990s, insurance industry in India till the late 1990s was controlled by, till late 1990s insurance was controlled by the government of India. ठीक है, मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनीज को अलाउड नहीं था कि वो इंश्योरेंस सेक्टर में जा सके. सो इट वाज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. देयर वर ओनली टू कंपनीज व्हिच यूज्ड टू प्रोवाइड इंश्योरेंस. फर्स्ट इज LIC, that is Life Insurance Corporation of India, and
GIC, that is जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सो लाइफ इंश्योरेंस क्या करता था? आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करता है. जनरल इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या था? टू गिव यू जनरल इंश्योरेंस ऑन योर गुड्स, ऑन योर कार्स, ऑन योर बाइक्स. ठीक है. सो 2 पॉइंट. फर्स्ट, द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस. सेकेंड, till late 1990s it was controlled by the government, central government, and there were only 2 companies operating into insurance: Life Insurance Corporation and General Insurance Corporation. Are we clear? Done. Shall we go ahead? Now the next topic that we're going to see is the recent trends in insurance sector. जैसे हमने देखा 1990s तक सिर्फ government was operating, the public sector was operating insurance sector. We will now see कि उसके बाद जब, if you remember first लेसन हम लोग ने न्यू इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ा था, जहां पर इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइजेशन लाया. सो वी विल सी इंश्योरेंस सेक्टर में वेदर देयर इज अ प्राइवेटाइजेशन और नॉट, और क्या क्या नया नया रोल्स आया एंड ऑल दो स्टफ. ठीक है. सो लेट्स गो अहेड. सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी गोना सी इज सेम इंश्योरेंस इंडस्ट्री, रीसेंट ट्रेंड्स in insurance industry. Recent trends in insurance industry, ये टॉपिक देखेंगे हम. So first जो नया ट्रेंड है is opening up insurance sector. Now this is the most important policy, or you can say the trend which Indian government decided. So as we discussed a little while earlier, that insurance industry was the monopoly of government in India till late 1990. To be very precise, till 1999, Indian insurance industry was monopolized and it was only managed by the government of India. No private companies were allowed to operate in insurance sector. 1999 के बाद इंडिया ने IRDA एक्ट लाया. इंडियन गवर्नमेंट ने IRDA एक्ट स्टार्ट किया, IRDA एक्ट एस्टैब्लिश किया. IRDA एक्ट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी of India. So IRDA is an association or an organization which regulates insurance sector in India. ठीक है. So जैसे we have RBI for banks, RBI Reserve Bank of India जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है बैंकिंग के लिए, वैसे ही वी हैव सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, व्हिच रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट इन इंडिया. ठीक है. वैसे ही वी हैव IRDA, व्हिच इज एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन व्हिच रेगुलेट्स इंश्योरेंस सेक्टर. तो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, प्लस जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वो IRDA बनाता है. सो 1999 में ये एक्ट आया था एंड इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन अप किया. ओपन अप किया मतलब क्या? प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया कि दे कैन नाउ एंटर इनटू इंश्योरेंस सेक्टर, दे कैन नाउ ऑपरेट एज एन इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है. सो दिस इज डिफरेंट. आई एम नॉट सेइंग अबाउट द फॉरेन कंपनीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन सेक्टर. इंडियन कंट्री में जो प्राइवेट कंपनीज थे उनको अलाउ किया कि आप अब इंश्योरेंस कंपनी ओपन अप कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेटाइजेशन लाना. सेकेंड, ठीक है. सो सेकेंड इज रीस्ट्रक्चरिंग. Restructuring GIC. What is GIC? General Insurance Corporation. So General Insurance Corporation को to year 2000 में GIC को restructure किया गवर्नमेंट ने एंड उसके सब्सिडरीज बनाए. जितने भी सब्सिडरीज थे GIC के, जैसे GIC RE साउथ अफ्रीका, सो वैसे ही 4-5 सब्सिडरीज को ओपन अप किया, GIC को अलग किया, इंडिविजुअल किया. It acted as now it is as an independent insurance company. It does not comes under the purview of government. Government ने अपना शेयर्स उसमें से निकाला एंड GIC को इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस फर्म बनाया. Then we have third one as FDI in insurance. Very important again. As we discussed here, opening up insurance sector में हमने क्या बोला? गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन अप किया, प्राइवेट सेक्टर को बोला आप इंश्योरेंस कंपनी चालू कर सकते हो. वैसे ही लेट 1990s में एंड 2000 में गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज को भी अलाउ किया कि आप इंडिया में आके इंश्योरेंस कंपनी खोल सकते हो, प्रोवाइडेड देयर आर सर्टेन कंडीशंस. जब FDI अलाउ किया, आई होप यू ऑल नो FDI, फर्स्ट मॉड्यूल में हमने सेकंड थर्ड चैप्टर में हमने FDI पढ़ा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो FDI में गवर्नमेंट ने बोला कि यू कैन
max to max, on the maximum side, the foreign company which is coming into India as an insurance company, they can hold only 26% stake in that insurance company. So suppose say if I tell you XYZ company आया, which is a USA based company, this company is an insurance company in America. Now they want to venture out in India. ठीक है, अब इंडिया में आने के लिए उनको एक कंपनी डालना पड़ेगा, but it cannot be an independent company, an individual company held by USA. It has to be a joint venture. मतलब इस कंपनी को XYZ प्लस एक कोई भी इंडियन कंपनी को, कोई भी एक इंडियन कंपनी जो इंश्योरेंस सेक्टर में है या बैंक फाइनेंशियल सेक्टर में है या कोई भी सेक्टर में है, दीज टू हैव टू कम टुगेदर, मर्ज, एक नया एंटिटी चालू करना पड़ेगा, वेर इन मैक्स टू मैक्स 26% ओनली कैन बी हेल्ड बाय द फॉरेन कंपनी. 26%. ठीक है, ये स्टार्ट में आया था जब हमने एफडीआई अलाउ किया गवर्नमेंट ने. अब द रेशियो इज 49%. 49% मतलब अब ये कंपनी में, तो सपोज से आई गिव यू अ रियल लाइफ टाइम एग्जांपल. तो सपोज से वी हैव आईसीआईसीआई प्लस प्रूडेंशियल. ICICI is an Indian company, Prudential is a foreign company. So ICICI and Prudential came together and set up ICICI Prudential Life Insurance Company or Insurance Company. They do both life insurance. Okay, Prudential does life insurance. Then there is one more company called as ICICI Lombard. Again, ICICI is an Indian company, Lombard is a foreign company. So ICICI Lombard does what? General insurance. ICICI Prudential does what? Life insurance. इस कंपनी में प्रूडेंशियल अगर आता है, सो इस कंपनी में द मैक्स टू मैक्स दे कैन होल्ड ओनली 49%. 51% हैज टू बी हेल्ड बाय आईसीआईसीआई, द कंपनी का स्टेक. क्लियर? एफडीआई का रूल्स नॉर्म्स क्या है? सो एफडीआई अलाउ किया. दिस इज द थर्ड पॉइंट, थर्ड ट्रेंड. देन वी हैव न्यू एंट्रेंट्स. न्यू एंट्रेंट्स इन इंश्योरेंस सेक्टर. So since the opening up of insurance sector, जब privatization किया, तब 7 insurance से total 7 companies थे insurers. That number has gone up to 57. At present, this is the current data of year 2017. 57 insurance companies are operating into India in both life and general insurance with 3 to 4 specified insurers. जैसे व्हाट इज स्पेसिफाइड इंश्योरेंस? तो सपोज से मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है, मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है. आई मैन्युफैक्चर सम गुड्स एंड आई एक्सपोर्ट इट टू डिफरेंट कंट्री. अगेन रिस्क है, मैं गुड्स बेचूंगा, ट्रांजिट में कुछ हो गया तो. सो एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने ECGC लॉन्च किया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन which provide insurance only for export related things, nothing else, no life insurance, no other general insurance, only for export. वैसे ही गवर्नमेंट ने for agriculture also, any person who is into agricultural activity, गवर्नमेंट ने AIC लॉन्च किया, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. ठीक है, so the number has gone up from 7 insurers to 57 after opening up the insurance sector. The next fifth point, if you see all these point guys, opening up insurance sector, privatization आया, restructuring GIC को as an independent insurance company बनाया गया, FDI allowed किया, foreign companies can now enter, new entrants went up to 7 to 57. ये सब चीजें एक point obvious है, growth of insurance sector. Definitely the first time premium which is measured as a secured, which is measured as a new business secured. तो फर्स्ट प्रीमियम मतलब क्या? तो जब आप एक इंश्योरेंस लेते हो, सपोज से मेरे पास मेरे लाइफ का कोई इंश्योरेंस नहीं है, आई वेंट टू अ कंपनी, मैं LIC के पास गया, मैंने बोला मेरे को इंश्योरेंस चाहिए. इंश्योरेंस उन्होंने बोला ठीक है, आपका लाइफ का वैल्यू 50 लाख है, मैं अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपके नॉमिनी को या आपके डिपेंडेंट को 50 लाख रुपीस दूंगा. फ्री में तो नहीं देंगे ना, आई हैव टू पे समथिंग. मैं ईयर ऑन ईयर बेस पे कुछ ना कुछ उसको पे करते रहूंगा, एक मिनिमम अमाउंट, and that will be called as premium. तो जो first premium मैं भरूंगा, that would be counted as what? That would be measured as what? New business secured, right? जो नया business आया insurance company, that number has gone up rapidly since the opening up of insurance sector. So growth बहुत ज्यादा हो रहा है. We'll always definitely see what is
How is the growth happening in India in insurance sector? There are two things to measure. You have penetration plus you have density. We'll come on to that point later. Of course, growth of non-life insurance has also gone up. Non-life insurance मतलब क्या? जनरल इंश्योरेंस, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा है. Why? अब सिंपल है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे गुड्स का मैन्युफैक्चर बढ़ेगा, कंपनीज ज्यादा आएगी, उनको और इंश्योरेंस रिक्वायर होगा, इंश्योरेंस और रिक्वायर होगा, तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस का ग्रोथ होना ही होना है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे व्हाट वी वर डिस्कसिंग अभी, पेनिट्रेशन एंड density of insurance. That's very important point. Now what do you mean by penetration? Suppose say India में India का population is around 130 crores, ठीक है. If I tell you India में 2 करोड़ लोग, और I can say 1.3 करोड़ लोगों के पास इंश्योरेंस है, ऐसे 1.3 करोड़ पीपल इंडिया में है जिन्होंने इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है अपने नाम पे, ठीक है. दैट इज पेनिट्रेशन. कितने लोगों ने लिया हुआ है? पेनिट्रेशन. हाउ मच इंश्योरेंस हैज पेनिट्रेटेड इन द इंडिया? नाउ दिस नंबर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू एनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज. इसका रीजन है, इंडिया में बेसिकली जो इंश्योरेंस है उसको एज अ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया है. Every year, now and then, आप कभी भी, if you are working, I generally have seen this happening in the month of March, February, March. All the insurance company, they will give you a call, they'll send you a message. आपने अपना टैक्स सेविंग किया है, आपने अपना टैक्स सेविंग किया है, नहीं किया है तो ये इंश्योरेंस बाय करो, आपको उतने टैक्स पे रिडेम्पशन ये मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा. Why इंश्योरेंस पे टैक्स? बेसिकली इंश्योरेंस इज अ सेविंग इन्वेस्टमेंट, राइट. आप सेविंग कर रहे हो, ठीक है, आप अपना फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हो. सो गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर आप ये पैसा इंश्योरेंस में डाल रहे हो तो अंडर सेक्शन 80C यू विल गेट रिबेट, आपको वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, उतना इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगेगा. सो all these insurance companies in India and the public as well, the people as well, have taken insurance as a tax saving fund. जबकि वो tax saving fund नहीं है, it's a insurance towards your risk. जो भी आपका रिस्क है, आपका जो रिस्क ऑफ लाइफ है, रिस्क ऑफ प्रॉपर्टी है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. So you got to take it as insurance. सो पेनिट्रेशन बहुत लेस है. अभी भी इलिटरेसी की वजह से लोगों ने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है. रूरल एरियाज में अभी भी पेनिट्रेशन बहुत कम है, ठीक है. सो पेनिट्रेशन, तो अगर मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, इंडिया में 130 करोड़ पीपल है, उसमें से 1.3 करोड़ लोगों के पास इंश्योरेंस है, मतलब इंडिया का पेनिट्रेशन कितना हो गया? 1%. करंटली इंडिया का इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है, इट वाज अराउंड 2.3% इन ईयर 2000, ठीक है. इन ईयर 2000 इट वाज 2.3%, which has risen to around 3.9% in 2017. That means it is increasing, but still, can you imagine, out of 130 crores, only 4%, approximately 4% of people in India has insurance. Otherwise, rest of them do not have insurance policies. ठीक है. So that's penetration. Now, what do you mean by density? Now, density मतलब क्या? Generally, अगर आप density of population count करते हो तो आप क्या करते हो? Total population upon total area. ये क्या बताता है कि एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पॉपुलेशन रहते हैं, ठीक है. सो वैसे ही अगर इंश्योरेंस का डेंसिटी हमें काउंट करना है तो हम क्या करेंगे? सो टोटल प्रीमियम अपॉन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. टोटल प्रीमियम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो कितना टोटल प्रीमियम ईयर ऑन ईयर आता है इंश्योरेंस सेक्टर में, कितने लोग प्रीमियम भरते हैं, डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है. इससे हमें क्या मिलेगा? डेंसिटी ऑफ इंश्योरेंस मिलेगा. सो इट इज जनरली काउंटेड इन डॉलर्स, बेसिकली टू ईज अप द, बिकॉज वी कंपेयर दिस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, टू द वर्ल्ड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स. सो the density in India of insurance is around $11.5.
the density of insurance in India is 11.5, was 11.5 in year 2001. ठीक है, मतलब अगर एवरेजली मैं देखूं तो हर एक इंडियन $11, $11.5 ईयर ऑन ईयर बेस पे इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करता है. सो द डेंसिटी ऑफ insurance in India was around $11.5 in 2001 and it has risen to $59.7 in year 2016. So from $11.5 to $59.7 in 2016, you can say yes, the density has increased. Of course, by world standards, if we compare it to the world standard, definitely it's not enough, but yes, it is lesser. Why? Because the penetration is less. अभी भी बहुत सारे लोग इंडिया में, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया डू नॉट बिलीव इन टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, डू नॉट इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस, अपने लाइफ को सेव प्रोटेक्ट नहीं करते, एंड दैट इज द रीजन डेंसिटी भी लोअर है. दिस इज लाइफ इंश्योरेंस का डेंसिटी गाइस. सेम वे जनरल इंश्योरेंस का डेंसिटी वाज अराउंड $2.3. ठीक है, $2.3 जनरल इंश्योरेंस का था एंड इट इज रिजन टू $13.2. $13.2. ठीक है, so this way we can say yes, the density has increased. Insurance का penetration has also increased in India. I hope we are clear with what is penetration and what is density. Very important point, guys. Penetration and density of insurance. Then we have consumer grievance redressals. This is nothing but basically This is basically the complaint section, जहां पर अगर एक पॉलिसी होल्डर जो इंश्योरेंस लेते हैं उनको अगर इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी कंप्लेंट करना है, दे कैन अप्रोच दिस कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल जो आपके कंप्लेंट पे एक्शन लेगा. ठीक है, सो कंप्लेंट ये भी एक सेटअप किया गया है. एंड देन देयर आर सम न्यू इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट और बाय IRDAI, यू कैन से न्यू इनिशिएटिव. 3 पॉइंट है यहाँ पर. फर्स्ट इज माइक्रो इंश्योरेंस गाइस. माइक्रो इंश्योरेंस मतलब क्या? ऐसे लोग जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, दो चीज, एक से लोग जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि हाई प्रीमियम पे कर सके, प्लस ऐसा भी है कि उनका लाइफ का वैल्यू इज नॉट मोर. ठीक है, अभी सपोज से इफ आई टेल यू एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ठीक है, he is earning what 400 500 rupees 300 rupees a day, डेली वेज लेबर है, कभी काम मिला कभी काम नहीं मिला, तो एवरेजली महीने का एवरेज अगर हम निकाले तो 10 to 12,000 रुपीज कमा रहा है. नाउ इफ आई टेल हिम कि यू टेक एन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड पे 25 to 30,000 yearly premium, that means he is paying 2 to 3 months का सैलरी. That is not possible. Plus उसके लाइफ का वैल्यू would not be that. So life value is counted as measured as basically आप कितना कमाते हो, आपका एज क्या है, आपको कोई डिजीज है कि नहीं है. सो जैसे जैसे ये सब फैक्टर्स चेंज होगा वैसे आपका प्रीमियम और सम एश्योर्ड भी चेंज होगा. सो ऑफ कोर्स माइक्रो इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया. जो ये लोअर इनकम क्लास है, जो जिनके पास इंश्योरेंस का कनेक्टिविटी नहीं है या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पा रहे उन लोग, तो उनके लिए माइक्रो इंश्योरेंस लॉन्च किया, जहां पर लाइक 2 लाख रुपीज सम एश्योर्ड या 3 लाख रुपीज सम एश्योर्ड या 5 लाख रुपीज सम एश्योर्ड. तो अगर इनको कुछ हो जाता है तो इनके डिपेंडेंट को 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा. आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ ह्यूज अमाउंट, बट स्टिल इट इज समथिंग दैट can give them some stability, right? So वैसे ही माइक्रो इंश्योरेंस लॉन्च किया गया. Till now there are 14 insurance companies in India who have launched micro insurance in India. Then we have corporate governance guidelines for insurance sector. It is nothing but जो कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, इंश्योरेंस कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द सीनियर मैनेजमेंट, वो कैसे होना चाहिए, उनका फंक्शन क्या होना चाहिए कंपनी का. सो उसके लिए गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस लाया. एंड ऑल्सो वी हैव गाइडलाइंस फॉर क्रेडिट इंश्योरेंस. व्हाट इज क्रेडिट इंश्योरेंस गाइस? ट्रेड क्रेडिट. हम कोई गुड्स बेच रहे हैं या हम कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पे जो हम इंश्योरेंस लेते हैं, सो उसके लिए भी IRDAI और गवर्नमेंट ने हमें कुछ गाइडलाइंस दिए हैं. ठीक है, नाउ these are the recent trends in insurance industry, guys. I hope it is clear. Opening up of insurance sector, new entrants, restructuring GIC, FDI आया, growth of insurance, growth of non-life insurance, penetration and density, consumer grievance redressal cell launch किया, and then there was some new initiative like micro insurance, corporate governance for guidelines for insurance sector, and then we also had guidelines on trade credit. I hope it is clear. Shall we go ahead? ठीक है, चलो.
Okay, so now we're gonna understand what is IRDA, guys. IRDA, as we discussed, it's Insurance Regulatory Authority of India. Basically, the body which regulates insurance sector in India. IRDA was set up in 1996, and in year 2000, it was constituted as an autonomous body. To regulate the insurance sector in India. Okay? So this is IRDA. Now the next we're going to see is objectives and roles of IRDA. Objectives or role of IRDA. On your screen you'll now see the points of objective and role of IRDA. So the first and the foremost objective role of IRDA, guys, is policy holders protection. Now simple, IRDA बना क्यों? इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना है, प्लस किसको प्रोटेक्ट करना है? पॉलिसी होल्डर को, कि जो पॉलिसी खरीद रहे हैं, जो पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज देयर हार्ड अर्न्ड मनी, सो कंपनी शुड नॉट चीट देम. सो पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट इज द फोरमोस्ट role of IRDA, the most important objective of IRDA. So to protect the interest of policy holders. The second point, guys, is to bring about speedy and orderly growth of insurance industry for the benefits of common man. So इंश्योरेंस सेक्टर का हमने अभी पेनिट्रेशन और डेंसिटी देखा था. सो IRDA का और एक रोल ये भी है कि वो उस पेनिट्रेशन को और डेंसिटी के नंबर्स को इंक्रीज करे. पेनिट्रेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें, इंश्योरेंस ले अपने लाइफ का, अपने गुड्स का, द लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, बिकॉज इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन ओनली. थर्ड ऑब्जेक्टिव और रोल इज टू सेट, प्रमोट, monitor and enforce high standards of integrity, financial soundness, fair dealing and competence of those it regulates. So ऐसा हो सकता है कि जैसे इफ आई टेल यू, अगर आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, ओ माय गॉड करके एक मूवी आया था, उसमें परेश रावल इज एन एक्टर एंड उसका एक दुकान बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक पूरा वो दुकान टूट जाता है, एंड व्हेन ही अप्रोचेस द इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज ही इज टेकन इंश्योरेंस ऑन दैट पर्टिकुलर शॉप, वो जब इंश्योरेंस सेक्टर को कंपनी को अप्रोच करता है तो इंश्योरेंस सेक्टर उसको बोलता है कि नो, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से अगर आपका गुड्स को कुछ होता है या आपके एसेट को कुछ होता है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ दिस. नाउ दिस इज बेसिकली, आई एम नॉट सेइंग चीटिंग. फर्स्ट इज इंटेग्रिटी. सो अगर इंश्योरेंस कंपनी कुछ रूल बना रहा है पॉलिसी के रिलेटेड, सो इट हैज टू बी मेंशन्ड. जब वो पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस सेल कर रहा है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, सो उसे इंश्योरेंस होल्डर को बताना चाहिए एवरी पॉइंट कि भाई जहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपको इसके लिए इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ये पॉइंट पे इंश्योरेंस मिलेगा, अगर आप 1 साल के अंदर मर जाते हो तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, वॉट एवर पॉइंट, द प्रीमियम कितना है, प्रीमियम कब तक भरना पड़ेगा, एवरी पॉइंट हैज टू बी clearly stated out to the insurance holder. So that is what the role of IRDA is also to set, promote, monitor and enforce high standards of integrity, financial soundness. Financial soundness मतलब the policy holder, the people should have some knowledge about finance. बेसिकली कैसे इंश्योरेंस काम करता है, इंश्योरेंस में सम अश्योर क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, कितना हमें मिलेगा, एंड ऑल द स्टफ. दैट वाज द थर्ड रोल. द नेक्स्ट रोल इज टू इंश्योर that insurance customers receive precise, clear and correct information. This we have already discussed. The next objective or role is to ensure speedy settlement of genuine claims to prevent insurance frauds and other malpractices. तो genuine claims मतलब क्या? जो अगर सपोज से मैंने अपने लाइफ के लिए इंश्योरेंस लिया था, अगर मुझे कुछ हो गया तो जो क्लेम होता है, सो अगर मैंने सपोज से 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया है तो मेरे मरने के बाद मेरे नॉमिनी, जिसको भी मैंने नॉमिनी सिलेक्ट किया है या जो मेरे डिपेंडेंट है, उसको फटाफट एकदम करेक्टली एंड स्पीडीली वो क्लेम मिलना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ टाइम व्हेन दे नीड, लाइक माय पेरेंट्स, इफ दे आर माय डिपेंडेंट आफ्टर माय डेथ, दे विल रिक्वायर दैट मनी टू सस्टेन देयर लाइफ. सो डेफिनेटली स्पीडी क्लेम होना चाहिए, जेन्युइन क्लेम्स होना चाहिए. अभी व्हाट एक्चुअली आल्सो इज जेन्युइन क्लेम. सपोज से मैं बोल रहा हूं आपको मेरा लाइफ का वैल्यू इज 1 करोड़, ठीक है. अब मैंने क्या किया, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास गया, मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, मैं कुछ प्रीमियम पे कर रहा हूँ. अब आई वांट मोर मनी, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 1 करोड़ से मेरा सफाइस नहीं है, आई वांट मोर सम अश्योर्ड. सो मैं और एक कंपनी के पास गया, सपोज से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास गया, मैंने और एक इंश्योरेंस निकाला 50 लाख रुपए का.
Now एक साल के बाद मैंने ये पॉलिसी निकालने के एक साल के बाद सपोज से मुझे कुछ हो गया. Now how much money should I get? Should I get 1 crore plus 50 lakh, 1.5 crore, or I should get only 1 crore because that is the value of my life? Of course 1 crore is the value of my life. That is the claim I should be getting. Why? Because मेरे लाइफ का वैल्यू तो 1 करोड़ है. मैंने 1.5 करोड़ रुपया क्यों मिलेगा मुझे जबकि मेरे लाइफ का वो वैल्यू नहीं है. So that is sum assured basically आपके लाइफ के वैल्यू पे होता है. The next objective or role is to promote fairness, transparency and orderly conduct in financial market dealing with insurance. So there has to be fairness and transparency and to bring about optimum amount of self-regulation in day-to-day working of the insurance industry. So these were some of the roles of IRDA. Roles and objective both are same. So the last topic of insurance industry is some of the issues and challenges that are faced by insurance industry in India. So very important question by the way. Issues में first is basically अगर customer satisfaction की बात करूँ मैं, so customer satisfaction is very less when it comes to insurance sector. People who buy insurance policies, customers who have taken insurance are very unhappy for about the company's delay. Like when it comes to settlement of claims, जब claim settle करने की बात आती है तो companies create a lot of hurdles. They try to purposely delay the claim process and all the stuff. So उसके वजह से customers are very unsatisfied or dissatisfied, and for this IRDA has to take some actions. Second issue is poor coverage. What do you mean by poor coverage? अभी हमने देखा था डेंसिटी एंड पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस विच इज वेरी लेस इन इंडिया. बहुत कम लोगों के पास आज भी इंश्योरेंस है, बहुत कम लोग आज भी इंटरेस्टेड है इंश्योरेंस बाय करने में. इसका एक और रीजन गाइस ये है कि इंडिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर पुअर क्लास के लोग हैं या फिर लोअर इनकम ग्रुप जो है वो उनका पॉपुलेशन ज्यादा है, एंड दीज पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड, कुड नॉट अफोर्ड to buy insurance. Why? Because उनका self sustenance नहीं हो पाता है proper, like दो वक्त की रोटी या फिर आप जो basic needs है, food, clothing, shelter, वो भी उनसे fulfill नहीं हो पा रहा. So they cannot take up insurance policy. So that is again the third issue is health insurance. Now India में health insurance is not very popular. Mediclaims basically, medical policies, basically health insurance is not a life insurance guys. अगर आप सपोज से आपको कोई डिजीज वगैरह है एंड उसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, सपोज से मुझे कोई बड़ा बीमारी हो गया, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा सडनली एंड 2.5 लाख रुपीज का खर्चा हो गया. नाउ दिस इज अ वेरी हाई एक्सपेंस. सो वैसे चीजों के लिए भी हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, बट इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट वेरी पॉपुलर, जबकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस होता है. The next point guys is use of technology. What insurance companies can do is they can use new technology in administrative purposes for settlement of claims, जिससे बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, डिले नहीं होगा कि क्लेम सेटल करने में, फटाफट अप्लाई हो सकता है, लोग जल्द से जल्द इंश्योरेंस ले सकते हैं एंड ऑल द स्टफ. सो बट टेक्नोलॉजी, one more reason for not use of technology is because India has high number of population, large population. So अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो डेफिनेटली मैन पावर का रिक्वायरमेंट कम होगा, which will thereby increase the unemployment rate. Then the next one is managing the risk. The large companies, जो बड़े giant companies है, basically they have huge liability, risk of heavy liability. जो goods वो manufacture करते हैं या जो goods वो export करते हैं या फिर जो machineries उन्होंने buy करके रखा हुआ है, जो वो land, जो factory बनाया हुआ है, it has a huge liability. उसको insure करना is one of the task for insurance sector. It's not so easy to measure or to value those goods or to value such huge companies, large companies. So that's managing risk. And you also have administrative efficiency. As we saw, India में insurance sector was controlled by the government. Only public sector was allowed to operate in insurance. Of course, then private industry came and private companies came at the later stage. But India में, because public sector was there,
पब्लिक यूनियन, वर्कर्स यूनियन फॉर्म होने लगे एंड दिस वर्कर यूनियंस हैड देयर ओन डिमांड्स एंड अगर वो डिमांड्स मीट नहीं होंगे तो उन लोग काम नहीं करेंगे, प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे. एंड प्लस पब्लिक सेक्टर ऑफ कोर्स वी हैव सीन उनका जो एफिशिएंसी होता है, उनका जो एम्प्लॉय एफिशिएंसी होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नहीं हो पा रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर्स एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं एंड दैट इज द इशू दैट इंश्योरेंस कंपनीज आर फेसिंग. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट insurance company or India as a country is facing when it comes to insurance sector. Let us now see some of the challenges that we are facing and when it comes to insurance. First is competition. Of course guys, as we saw late 1990s में 1999 में Indian government ने insurance sector को open up किया. Lot of private companies came into insurance sector. Lot of FDI came, foreign companies came into insurance sector, जिसके वजह से जो local companies थे जैसे LIC भी हो गया तो उनका जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था उस कंपनी का वो कम होने लग गया. कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. सो दैट इज वन ऑफ द challenges that Indian company faces, insurance company. Fund management, a very important point guys. Fund management. Now what do you mean by fund management? सिंपल है, मेरा लाइफ है, मैंने इंश्योरेंस लिया, मैं हर साल का 25,000 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हूँ. फॉर द नेक्स्ट 20 years आई एम गोना पे. मेरे ऐसे करोड़ों लोग हैं जो वो प्रीमियम पे करते हैं. ठीक है, ये जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट करता है वो सिर्फ अपने पास नहीं रखता. मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, मुझे कुछ हो गया तो कंपनी मुझे पे करेगा. सो वो पैसा कब पे, कैसे पे करेगा? सो जो इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, इंश्योरेंस कंपनी उसे इन्वेस्ट करता है कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में, रियल एस्टेट में एंड ऑल दोस इन्वेस्टमेंट जहां पर भी वो कर सकते हैं. सो ये फंड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. अगर आप सोचो एक इंश्योरेंस कंपनी इतना इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है बट अगर वो फंड इफेक्टिवली एफिशिएंटली इन्वेस्ट नहीं किया और उसे अगर नुकसान हुआ तो वो क्लेम कैसे सेटल करेगा? अगर क्लेम सेटल नहीं किया मतलब इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो नहीं होगा. सो दैट इज व्हाई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनीज इन्वेस्ट प्रीमियम अमाउंट कलेक्टेड इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ इन्वेस्ट मार्केट सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इक्विटीज. दे रिक्वायर एन एक्सपर्ट टीम. एक फंड मैनेजर होना चाहिए जो क्वालिफाइड है, जो एक्सपीरियंस है, जिसे पता है कि कौन सा मार्केट कब कितना परफॉर्म करने वाला है एंड उसके हिसाब से वी शुड बी इन्वेस्टिंग. कॉस्ट एस्केलेशन. Cost escalation. Now basically besides the staff वगैरह, insurance company require agent for selling insurance policies. Now इंश्योरेंस सेक्टर में बेसिकली ये एजेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC वर्क्स ऑन दिस फॉर्मेट. उनका एम्प्लॉयज ज्यादा नहीं है, उनके एजेंट्स ज्यादा है. सो इफ टुमारो यू वांट टू बी एन इंश्योरेंस एजेंट, यू जस्ट गिव एन एग्जाम ऑफ IRDAI और आप LIC में आप एज एन एजेंट काम कर सकते हो. यू कैन बिकम एन LIC एजेंट एंड यू कैन सेल देयर इंश्योरेंस पॉलिसी. ऑन एवरी इंश्योरेंस पॉलिसी दैट यू सेल यू गेट एन कमीशन. ठीक है, नाउ ये कमीशन जो पे करते हैं इट इज लॉन्ग टर्म. लाइक यू नो, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, मैं एजेंट हूं, आपने मुझसे इंश्योरेंस पॉलिसी लिया. नाउ मुझे कंपनी कमीशन देगा फर्स्ट ईयर. आपने सेकेंड ईयर का प्रीमियम पे किया, उस पे भी कमीशन मिलेगा. आपने थर्ड ईयर का प्रीमियम पे किया, उस पे भी कमीशन मिलेगा. सो ये रिकरिंग कॉस्ट है कंपनीज के लिए. सो कॉस्ट एस्केलेट हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके वजह से कंपनीज कैन नॉट डू देयर फंड मैनेजमेंट प्रॉपरली. जो पैसा आ रहा है वो कम आ रहा है, तो डेफिनेटली जो भी पैसा आ रहा है हमें उसको वापस तो करना है ना इंश्योरेंस होल्डर्स को. सो दैट इज कॉस्ट एस्केलेशन. द नेक्स्ट वन इज premium rate. Now what do you mean by premium rate? More insurance companies in market lead to competition resulting in lowering premium to attract customers. Insurance company therefore required to price the product at a competitive rate. Very simple. हमने first point देखा competition. So अगर monopoly है, there is no competition, तो मैं अगर suppose से मेरा ही कंपनी है तो मैं जो इंश्योरेंस प्रीमियम बोलूंगा आपको पे करना पड़ेगा because you have no choice but me, right? बट अगर कंपनीज आते हैं और आज अगर 10 कंपनी है, आज अगर 50 कंपनीज है, तो कस्टमर जो पॉलिसी होल्डर्स है उनके पास ऑप्शन है. अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए 10,000 रुपया प्रीमियम ले रहा हूं साल का एंड दूसरा जो कंपनी है वो 9,000 ले रहा है, तो आप उसके पास जाओगे, बेनिफिट तो सेम मिल रहा है ना. सो इससे क्या हो रहा है, जो कंपनीज है वो अपना प्रीमियम का रेट डिक्रीज कर रही है, रिड्यूस कर रही है सो एज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स. बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रीमियम कम करने से उनको जो पैसा आ रहा है वो कम आ रहा है.
फंड मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं होगा, उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, प्लस रिटर्न फिर से नहीं हो पाएगा. सो दैट इज प्रीमियम रेट. Then you have covering agriculture sector. Most important thing, challenge here guys, covering agriculture sector. Now it is very important guys. Crop insurance is something that does not attract many insurance companies because there's a risk, huge risk. India typically being a monsoon country, India में agriculture आज भी बहुत सारे स्टेट्स में मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है. देयर इज नो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, वाटर स्टोर करके नहीं रखते ताकि जब बारिश का जो पानी आता है उसको स्टोर नहीं करते ताकि जब आगे जाके अगर बारिश नहीं आए तो वो पानी यूज कर सके. इरिगेशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर फाइनेंसिंग फैसिलिटी नहीं है जिससे फार्मर्स सीड वगैरह खरीद सके और प्रॉपर वेल गुड क्वालिटी सीड्स खरीद सके, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड देयरबाय एग्रीकल्चर सेक्टर को इंश्योरेंस नहीं मिल पाता, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस इट्स अ ह्यूज थिंग. अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को खाली अगर हम पेनिट्रेट करें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो पेनिट्रेशन हमने देखा इट कैन राइज अप टू 1 to 2% more. ठीक है. सो दैट्स कवरिंग एग्रीकल्चर सेक्टर. द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस सेम चैलेंज हमने जो देखा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. 2 पॉइंट. पहली बात तो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते बिकॉज टेक्नोलॉजी यूज किया तो मैन पावर का रिक्वायरमेंट कम होगा, मैन पावर का रिक्वायरमेंट कम हुआ मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कंट्री में. सेकेंड, दोज हु आर वर्किंग देयर, द पीपल हु आर ओल्ड एजेड, पीपल हु आर सीनियर, दे डू नॉट understand how to use technology, not very well versed. I'll not say understand, but they are not very well versed with the technology, जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी का implementation या usage problem होता है. And safeguarding customers interest, the most important challenge. आज भी there are many issues, many instances जहाँ पर ऐसे instance देखे गए जहाँ पर insurance company is cheating the customers, the agents are cheating the customers, the policy holder basically, and to safeguard that, to track that, basically there is no you can say there is no process or procedure जिससे हम उसको track कर सके या हम उसको safeguard कर सके. And that is the biggest challenge that insurance company is facing in India, and जिसके वजह से Indian policy holder या Indian people में trust issues आ गया कि whether to buy insurance or not. ठीक है. These are some of the issues and challenges that the insurance industry collectively is facing today in India, and to tackle this they need to come out with some solutions. Okay, so with this we have finished guys insurance sector in India. The next lesson, this lesson we have completed. In the next session guys we are going to continue with the next topic, the new topic, that is money market. We will understand what is money market, types of money market, the procedures and all. Till then I hope you all have understood insurance industry. Thank you so much guys. We'll meet you in the next session. Happy learning. Thank you so much.